Welcome everyone to our engineering courses lecture series on programming using C, C++ and Python। और आज के सेशन में हम स्ट्रक्चर एंड क्लास या क्लासेस के बारे में लर्न करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर्स को हमने पहले ही एज स्पेशल डाटा टाइप हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, जिसमें हमने ये सीखा है कि विद इन अ स्ट्रक्चर डाटा टाइप वी कैन हैव मल्टीपल डाटा टाइप्स जो कि हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसकी आप कह लें कि जो एडवांस वर्जन और द मोस्ट कॉमनली यूज वर्जन आजकल जब हम सी प्लस प्लस की बात करते हैं, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट क्लासेस वी आर टॉकिंग अबाउट सी प्लस प्लस, क्योंकि इसके अंदर ये डाटा टाइप जो है इससे एसोसिएटेड है। तो इवन दो इनका जो है वो दे आर क्वाइट सिमिलर, इसकी माइनर डिफरेंसेस या मेजर डिफरेंसेस के अंदर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। वी जस्ट टेक इट लाइक दिस कि स्ट्रक्चर जो है मोस्टली दे स्टार्टेड विद सी एंड जो क्लासेस हैं दे आर बेसिकली डाटा टाइप ऑफ सी प्लस प्लस। लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर यू कैन ऑल्सो डू स्ट्रक्चर्स एज वेल इफ रिक्वायर्ड। ठीक है जी, तो चलें देखते हैं कि व्हाट वी विल लर्न इन टुडेज इंफॉर्मेशन सेशन। ओके, सो लेट्स कैरी ऑन। तो ये स्नैपशॉट है जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं कि वर्किंग विद स्ट्रक्चर्स, और इसमें बेसिकली क्लासेस का इतना जिक्र नहीं है बिकॉज दिस बुक इज़ मेनली फॉर सी प्रोग्रामिंग। तो लेकिन ये है कि जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो कॉमनली यूज कॉन्सेप्ट हैं रिलेटिव टू स्ट्रक्चर्स वो विल कवर व्हाइल कवरिंग क्लास एज वेल। तो ये देखें, जैसे पहले हम ये एग्जांपल्स कर चुके हैं सी के अंदर कि स्ट्रक्चर इज अ डाटा टाइप जिसके अंदर आप मल्टीपल डाटा वेरिएबल्स या डाटा टाइप्स आप हो सकती हैं। ये तो इसमें तो इस एग्जांपल में तो सिर्फ इंट ही दिखाए गए हैं, लेकिन यू कैन हैव फ्लोट, डबल, चार, अरेज, और यू कैन इवन हैव अ स्ट्रक्चर विद इन अ स्ट्रक्चर एज अ डाटा टाइप, जैसे लिंक्ड लिस्ट की एग्जांपल्स में पिछले लेक्चर्स में हमने वो किया है। ठीक है, तो इस एग्जांपल को हम पहले रन कर चुके हैं, तो आपसे यही है कि जस्ट डू दिस एग्जांपल, रन इट अगेन जस्ट टू रिकॉल कि स्ट्रक्चर के डाटा एलिमेंट्स को हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसके अंदर के जो डाटा एलिमेंट्स है उसको उसकी वैल्यू अपडेट कैसे करते हैं। और ये देखें, आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि मतलब एक जो डाटा टाइप आपने डिक्लेयर किया है स्ट्रक्चर जो कि टुडे है, यू कैन सी है, तो उसके अंदर मंथ, डे और ईयर को जब आप अपडेट करें तो उसकी जो मेमोरी लोकेशन वो कैसे अपडेट हो रही है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट इज शोइंग द स्ट्रक्चर इन कंप्यूटर मेमोरी। दिस सेक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। जो बुक से स्नैपशॉट लेके कट एंड पेस्ट किया हुआ, दिस इज योर प्रोग्राम, बट दिस जस्ट टू ब्रिंग क्लैरिटी इन इट। अगेन यू कैन डू दिस प्रोग्राम इन C++ एंड पाइथन के अंदर स्ट्रक्चर की कोई मतलब जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं है, बट पाइथन डज हैव क्लासेस। तो मतलब आपको चैलेंज देने का यही है कि देखें आप पाइथन के अंदर अब इसी तरह की प्रोग्राम को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगेन फॉर दैट यू जस्ट सिंपली फॉलो W3 स्कूल्स के वेब पेज पे जाके देखें और फिगर आउट करें। वहीं पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या आप लिनक्स से जो टर्मिनल के एनवायरनमेंट है वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट द आइडिया इज ये एक प्रॉब्लम है जो कि इम्प्लीमेंट की गई है सी में। C++ में यू वेरी सिंपल, यू विल बेसिकली डू द सेम, जस्ट सी इन सी आउट का डिफरेंस होगा। लेकिन पाइथन के अंदर आप कैसे करेंगे, इट्स इवन सिंपलर। ठीक है, तो लेट्स कैरी ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जब हम स्ट्रक्चर या क्लासेस की बात करते हैं तो ये दोनों जो वर्ड्स हैं दे आर बेसिकली रिलेटेड टू, जिसे हम कहते हैं
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये OOP जो है दैट्स व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, तो इन दो वर्ड्स को समझने के लिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करना आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द या इन सिंपल वर्ड्स, यानी कि जब भी हम आजकल के दौर में, बल्कि आप ऐसे समझ लें कि आजकल के दौर में जब भी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है टू इम्प्लीमेंट रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स प्लेज अ वाइटल रोल इन डिक्लेयरिंग टाइप ऑफ डाटा, इन मैनेजिंग डाटा, इन स्टोरिंग डाटा, इन रिट्रीविंग डाटा। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप यू अंडरस्टैंड व्हाट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज। अगेन, it's a very simple concept and you just pay attention कि मतलब every principle, यानी कि यहाँ पे 4 principles आपको दिखाए गए हैं जो कि object oriented programming से related है, and these are the core principles, यानी कि 4 ही principles होते हैं object oriented programming के अंदर। just understand each one of that very clearly so that you become a good programmer and especially a good object oriented programmer। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है उसे कहते हैं हम इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ओनली एक्सपोजेस द सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन, तो मतलब जैसे क्योंकि अब हम स्ट्रक्चर्स पे तो हम काम कर चुके हैं, तो देखिए स्ट्रक्चर के अंदर जैसे मैंने कहा मल्टीपल डाटा टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एक ऐसा डाटा टाइप जिसे हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसके अंदर फीचर है। इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि तमाम जो डाटा उस डाटा टाइप के अंदर डिक्लेयर किए गए हैं, जैसे क्लास है सपोज करें, उसके अंदर वो तमाम मेंबर्स जो हैं वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। दैट्स व्हाट इट मींस। ठीक है, और ये जो मैं चाहूँगा कि चलिए व्हाई नॉट आई विल एक्सपोज यू टू एन एग्जांपल एज वी गो अलोंग, ताकि वो आपको जो है वो थोड़ी सी जो क्लैरिटी रिक्वायर्ड है वो आपको इसमें आपको मिल सके। तो लेट्स गो टू द नोट पैड। देखें, अब ये एक नोट पैड है। ठीक है, इसमें मैंने एक डाटा टाइप, ये क्लास मैंने जो है वो डिक्लेयर किए। तो जैसे जैसे मैं ये कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगा तो लेट्स फोकस ऑन दिस क्लास। ठीक है, अब इसमें देखें इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि देखें ये एक डाटा टाइप है इंट माई PRV नम, प्राइवेट है क्योंकि इसकी देखिए प्राइवेट मैंने कीवर्ड इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो डाटा मेंबर है वो फंक्शन मेन या किसी और फंक्शन से मैं डायरेक्टली क्लास, जैसे ये क्लास मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है माई OBJ, सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए मैं डायरेक्टली इसे एक्सेस नहीं कर सकता बिकॉज इट्स प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। उस केस के भी अंदर भी मैं डायरेक्टली इसे अपडेट नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी पब्लिक ये जैसे पब्लिक फंक्शन होगा, जैसे ये है फंक्शन बिकॉज इट्स पब्लिक, तो इस पब्लिक फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए आई कैन एक्सेस दिस प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डाटा। ठीक है, तो इसे कहते हैं इनकैप्सुलेशन, क्योंकि ये जो डाटा टाइप्स हैं जो कि प्राइवेट हैं या प्रोटेक्टेड हैं, दे आर हिडन, they are secured from public access unless and until you know the name of the function to use to access this particular data। इसके अंदर काफ़ी बेनिफिट्स हैं, लेकिन फ़िलहाल हम जो है ना बस इसी पे फोकस करेंगे। इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ओनली एक्सपोजेस द सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन, तो जो पब्लिक है इन C++ के केस में दे आर डायरेक्टली एक्सेसिबल, लेकिन जो प्राइवेट या प्रोटेक्टेड है दे आरंट। तो दैट्स व्हाट इनकैप्सुलेशन मींस इन
relation to C++ programming. Abstraction का क्या मतलब है? Abstraction में मतलब है कि hides complex details to reduce complexity. इसकी एग्जांपल आप ये देख लें कि जब हम कार को ड्राइव कर रहे होते हैं तो स्टीयरिंग और बाकी चीज़ों की हमें इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन अंडरलाइन जो डिटेल है कि वो स्टीयरिंग या ब्रेक या एक्सेलरेटर या इन केस ऑफ मैनुअल गियर जो क्लच है आपका, वो कैसे काम कर रहे हैं, तो उसकी अंडरलाइन डिटेल जो है दैट आर हिडन, वी डोंट नीड टू नो अबाउट दैट इंफॉर्मेशन, तो दैट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन. तो यानी कि प्रेजेंटिंग यूजर्स with information where they don't care about the underlying complex details. So that's what abstraction is, and that's one of the concept relating to object oriented programming. Inheritance का मतलब ये है कि जो भी आपने यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो डाटा टाइप आप डिक्लेयर करेंगे, आप उसको कॉपी कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं इन अ न्यू डाटा टाइप. जैसे सपोज करें, सॉरी मेरे ख्याल में मैंने स्क्रीन को स्विच नहीं किया, चलें अभी इतना हो गया है तो चलें, लेट्स गो टू द नोटपैड. अच्छा, इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि ये जो मैंने माई क्लास जो डिक्लेयर किया है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी एक माई क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है. तो ये माई क्लास को मैं कॉपी कर सकता हूँ एक और क्लास, जिससे मैं लेट्स से टेस्ट क्लास 1, तो कैसे कर सकते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये कॉपी करना इट्स पार्ट ऑफ, जिसे कहते हैं कि इनहेरिटेंस, कि मैं इनहेरिट कर रहा हूँ जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड क्लास है उसको एक नई क्लास में, और जो नई क्लास में जब मैं उसे इनहेरिट कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली सेम हो माई क्लास के, उसके अंदर अपनी भी फीचर्स, डाटा टाइप्स, मेथड्स या फंक्शन उसमें हो सकते हैं. तो ये बेसिकली यहाँ पे कहने का मकसद है, ठीक है. तो दिस व्हाट मींस बाय इनहेरिटेंस. तो लेट मी गो बैक टू क्रोम. तो ये इसका मतलब है इनहेरिटेंस, ठीक है. तो हमने इनकैप्सुलेशन के बारे में अंडरस्टैंड कर लिया. इट्स मीन विच ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन इज एक्सपोजेस पब्लिकली और नॉट. एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि जस्ट नोइंग द हाई लेवल डिटेल्स, अंडरलाइन जो कॉम्प्लेक्स डिटेल्स है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत ना हो. इनहेरिटेंस का मतलब है जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड डाटा टाइप है उसको नई क्लास में या ऑब्जेक्ट में हम कॉपी कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं. दैट्स व्हाट इनहेरिटेंस इज. और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है, पॉली मीन्स ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स फेसेस. सो मैनी फेसेस मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म. इसका क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर जो C++ के लिहाज से कि एक जैसे फंक्शन है या मेथड है, it can take many forms. So that's what it means by polymorphism. ठीक है, entities can have more than one form. इसके लिए या इसको समझने के लिए तो मैं दोबारा नोटपैड में आपको कोई एग्जांपल पे लेकर चलता हूँ. जैसे सपोज करें कि ये एक फंक्शन है, ठीक है. तो इस फंक्शन को मैं सेम नेम के साथ with different number of parameters I can declare it. So that's what it means by polymorphism. ठीक है, तो यानी कि ये फंक्शन नाम है और इसके अंदर एक पैरामीटर होगा तो it will compile run perfectly fine. यही फंक्शन नेम है, उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, it's very much true. यही फंक्शन नेम है और उसके अंदर 3 पैरामीटर हैं या 4 हैं या 5 हैं, तो basically the function name is the same but the behavior is different, and that's what it means by polymorphism. So that's what it means by polymorphism, that one function can have many one function name
can have many implementations. The only thing what we need to do is to have different number of parameters in C++. Okay, so that's the form of polymorphism, which is I think depending on जो आप problem को implement कर रहे हैं, it's very powerful. ठीक है, so make sure that you know these 4 principles relating to object-oriented programming, and you will be tested not only as a concept but also in your programming exams, practices, quizzes. Let's go to the next slide. तो यहाँ पे हम अब हर एक जो कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है उसको हम फर्दर ऑन बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि उसको जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया है लेकिन इन स्लाइड्स के जरिए भी ज़रा फर्दर ऑन उसको क्लैरिफाई किया जाए बिकॉज दिस वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगेन इनकैप्सुलेशन में जैसे क्लास है तो क्लास के मेंबर्स जो हैं वो कैन बी पब्लिक. तो पब्लिक का मतलब है इट्स एक्सेसिबल आउटसाइड वर्ल्ड, इट्स डायरेक्टली एक्सेसिबल. लेकिन जो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट है एक्सेसिबल टू ड्राइव्ड क्लासेस. तो प्रोटेक्टेड में ये है कि जो आप इनहेरिट करेंगे क्लासेस फ्रॉम दिस क्लास तो वो प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो हैं जो ड्राइव्ड क्लासेस में दे आर एक्सेसिबल. लेकिन जो प्राइवेट है दे आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड. तो इन दोनों टाइप को के जो डाटा टाइप्स हैं इन अ क्लास वो कैसे एक्सेस करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, वो यूज पब्लिक मेथड्स या पब्लिक फंक्शंस विद इन अ क्लास टू एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डाटा डिक्लेयर्ड इन अ क्लास. ठीक है, तो इट्स बेसिकली just to make sure the information is secured. It's all relating to security, enhancing security in your programs, solutions. Okay, so that's what encapsulation is. Let's go to the next slide. So this is abstraction. और abstraction में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि what it means कि C++ के लिहाज से कि only steering braking interface is provided to you and you only need to care about this and know about this how to steer the vehicle and how to accelerate it, how to brake it. Steering braking interface gives input to the car, but the underlying details उसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है. That's what it means by abstraction. Let's read that. Implementation details of car, engine, cooling, braking system are hidden from the user. The user only gets interface to interact with them. User doesn't need to know how these actually work. So that's what it means by abstraction. Okay, let's go to the next. Within the same, another example, type of data abstraction in C++. तो जैसे सपोज करके आपके जो क्लासेस हैं तो क्लासेस के अंदर मतलब there are 2 types of data abstraction in C++. ये in particular to abstraction concept relating to data, ये C++ में कैसे है उसको ये एक्सप्लेन किया जा रहा है. तो अब देखें कि C++ में या C के अंदर हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं, basically files with special type of instructions in them, और हमारे पास classes होती हैं या यहाँ पे structures भी कह सकते हैं कि they are basically in a separate type of files. So that's the level of abstraction for data in C++. ठीक, let's move to the next slide. ये इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया गया है कि ये बेस क्लास है. जैसे हमने नोटपैड में आपको सपोज करें कि वो बेस क्लास है और बेस क्लास के अंदर हमने फीचर्स हैं एक्स और वाई है, कोई भी फीचर्स हैं, डाटा टाइप्स हैं, मेथड्स हैं, मतलब जो भी है वो बेस क्लास के फीचर्स इसके अंदर रिप्रेजेंट किए गए हैं एज अ ब्लॉक डायग्राम. और उससे अगर हम एक ड्राइव क्लास लेते हैं तो ड्राइव क्लास के अंदर ये फीचर एक्स और वाई तो हो गई है, देखें फीचर एक्स भी है फीचर वाई भी है, लेकिन वी कैन ऐड the derived class has its own features as well. ठीक है, so this is called inheritance. ठीक है, जैसे सपोज करें कि birds और birds के common features होते हैं
लेकिन अगर हम ईगल की बात करेंगे विच इज़ अ स्पेशल डिराइव्ड क्लास फ्रॉम द बेस क्लास, तो उसके अंदर वो तमाम कॉमन फीचर्स होंगे जो कि बर्ड्स के अंदर होते हैं, लेकिन ईगल हैज़ इट्स ओन फीचर्स एज वेल। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल पे आप ये देखें कि कैसे ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के साथ हम जो है वो इसको रिलेट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब बेसिकली है कि जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं we can we can basically easily categorize them as a class or as a type of class। किसी भी चीज को आप रियल वर्ल्ड में देखें, your pen or pencil, your paper, your environment, yourself, or any object within your human body can be declared as a class। ठीक है, तो that's what the power of object oriented programming is। We can treat the real world objects as a type of data which basically resembles or nearly resembles the reality of that particular object। ठीक है, और this is a very I think this is a very good example for that। birds हैं, there are many type of birds, but birds are birds and they have common features। ठीक है, लेकिन ईगल की जब हम बात करेंगे तो ईगल has its own peculiar, special, particular features, and again there are type of eagles। So if you just eagle, so I think you understand what I mean। It's all about in evolution, inheritance। So let's move on to the next slide। और इसमें हम ये polymorphism की बात कर रहे हैं। And what is a polymorphism? So let's read this। C++ polymorphism is the capability of objects of different types to respond to functions of the same name। जैसे हमने पहले मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, the program does not know the actual object type in advance। The word polymorphism is a mixture of two words। ये जरा टाइपो है, that's okay। So ये भी टाइपो है, poly and morphism, where poly means many and morphism means forms। It is applicable when the classes have interacted with each other through inheritance। ठीक है, तो ये है जी पॉलीमॉर्फिज्म। ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये वर्बफुल फंक्शन होते हैं। अगेन द टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ये जो मैंने आपको फंक्शन की एग्जांपल दी थी कि वन फंक्शन हैज विद मल्टीपल पैरामीटर्स, तो दे कैन एग्जिस्ट, दैट्स पार्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, इसी तरह ऑपरेटर्स को भी ओवरलोडिंग कर सकते हैं। अगेन वर्चुअल फंक्शन इज अगेन पार्ट ऑफ दिस पॉलीमॉर्फिज्म। ये जैसे मैंने आपको ये अनदर एग्जांपल है जो कि मैंने वेब से लिया है। तो यू कैन सी ए सेम फंक्शन नेम विद नो पैरामीटर्स, function same function, all the function names are same except the number of parameters। And again the type of parameter, even though this is 2 and this is 2 as well, but the type of parameters are different, and this is allowable in C++ to have functions like this। ठीक है, so when you call this function with to float data, this function will be like executed। When you call this function with to int data, this function will be executed। And when you call this function with no input parameters, this function will be executed, and this is what we call polymorphism। Let's go to the next slide। So जैसे आपको बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है बेसिकली उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उसके जो फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करके नियर to the reality of that object उसको हम कैप्चर कर सके। और that's what a class data type is, and why we and that explains why we need structures or class data types। जैसे देखें it's a flower, right? and ये flower के आप देखें parts हैं, इसके नेम मुझे मतलब वो since it will be
टाइम कंज्यूमिंग, पर एनी हो फ्लावर है डिफरेंट सेक्शंस, पार्ट्स, और हर पार्ट का जो है एक नाम होता है। तो इसको हम अगर हम प्रोग्रामिंग के अंदर इसे हम ये जो इंफॉर्मेशन है रियल वर्ल्ड की वो कैप्चर करना चाहेंगे, तो क्लास इज द बेस्ट, ये स्ट्रक्चर इज द बेस्ट मेथड टू डू दैट। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है फ्लावर, और उसके अंदर मैंने एक चार डाटा टाइप है जिसमें वो कलर के फ्लावर का कलर क्या है वो स्टोर करेगा। ये इंडोर है कि आउटडोर है, इट्स अ बूलियन वेरिएबल बिकॉज इट कैन बी ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो वो यहाँ पे स्टोर करेगा इसका सीपाल, पेटल, ब्रैक्ट, स्टैमन, पिस्टल, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे। तो ये देखिए कैसे हमने एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को हमने प्रोग्रामिंग के अंदर उसे एज अ डाटा टाइप, यहाँ इस केस में स्ट्रक्चर, लेकिन इट कैन बी इजीली बी क्लास, और वो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया। तो अब ये है कि इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इसको हम किसी डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। तो जस्ट टू लेट यू रियलाइज द पावर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो लेट्स कैरी ऑन टू द ये एग्जांपल मेरे ख्याल में सी में, लेट्स गो टू एग्जांपल। अगर मैंने फ्लावर की है तो लेट्स ट्राई टू रन दैट। ये सी प्लस प्लस की डायरेक्टरी है, मेरे ख्याल में क्योंकि उसकी ज़रूरत थी नहीं, हम स्ट्रक्चर्स को ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो एग्जांपल मैंने यहाँ पे नहीं की करके रखी हुई। लेकिन इट्स इनकरेज यू आर ऑल इनकरेज टू do this example in your own time, ठीक है। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इस एग्जांपल को जब आप कंपाइल रन करेंगे तो बेसिकली यू डोंट गेट एनीथिंग बिकॉज द ओनली थिंग व्हाट वी आर डूइंग हियर इज ये स्ट्रक्चर डिक्लेयर है और ये स्ट्रक्चर के डाटा टाइप डिक्लेयर है। तो आपके for you as a practice just update all the values within the जो structure variables हैं उन सबको। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ तो मैंने आपको दिखाया नहीं कि ये जो सीपल वगैरह है दिस इज अ स्ट्रक्चर विद इन अ स्ट्रक्चर। तो ये देखिए कि बिकॉज ये जो क्योंकि ये जो सीपल से मुतालिक जो इंफॉर्मेशन है it's not only just one information, it can be different for different type of flowers, so or it contains different information within CPAL, so that's why it's a structure within a structure. So it will जैसे मैंने कहा कि it will get really interesting because it really captures the reality of the information relying or lying in one particular given object. स्टैमन जो है ये देखिए स्टैमन जो है बेसिकली स्ट्रक्चर विद इन अ स्ट्रक्चर। इस अंदर एक इंफॉर्मेशन नहीं है, मल्टीपल इंफॉर्मेशन विद इन स्टैमन। इसी तरह ब्रैक्ट है, तो सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो इसे आप कंपाइल करके रन कर सकते हैं। द बेस्ट आप ये कर सकते हैं कि कलर के अपडेट करके प्रिंट करके देख लें, और बूलियन इंडोर और आउटडोर है वो करके आप देख लें। इट विल बी इनफ प्रोग्रामिंग फॉर यू बिकॉज इसके अंदर आप जाएंगे तो is good। अगर आप एक वेरिएबल या दो वेरिएबल विद इन दैट स्ट्रक्चर आप जो है वो डिक्लेयर करें, बिकॉज यू हैव टू डिक्लेयर दिस स्ट्रक्चर बिफोर यू कैन completely compile and run it. But anyhow, it's encouraging, you do it, it will be good for you. So let's carry on to the next slide. अब ये यहाँ पे अगेन इट्स अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, इट्स बेसिकली अ प्लांट और जैसे ट्री कह लें आप, ठीक है। और इसमें अब कहाँ से स्टार्ट है, मतलब ये रूट इन इटसेल्फ एक क्लास है, स्टेम है, फ्रूट्स, लीफ, फ्लावर, सो दीज आर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट।
which has a root system and a shoot system. ठीक है, ये देखिए parts of a tree है. Tree is kind of a यानी कि plant में आप कह सकते हैं. ठीक है, तो ये crown है इसका, ये इसका trunk है, ये इसका roots है और ये parts of a trunk है. तो सिर्फ दिखाने का मकसद यहाँ पे ये है कि देखें आप क्लास को इस्तेमाल करके एक क्लास आपकी सिर्फ ट्रंक के लिए हो सकती है. ठीक है, जो ट्रंक के तमाम इंफॉर्मेशन जो है कैप्चर करेगी. एक क्लास या स्ट्रक्चर आपका जो है वो क्राउन के लिए हो सकता है, एक क्लास या स्ट्रक्चर आपका सिर्फ रूट के लिए हो सकता है. तो दैट्स हाउ वी कैप्चर द रियल वर्ल्ड रियलिटी ऑफ डाटा इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड यूजिंग क्लासेस और structures. Let's carry on. And another example is our human body. So we can have a separate class for the heart, separate for kidneys, lungs, brain, eye, you name it. So basically we are real world objects are basically a combination of classes. So that's what it is. Just to show you that कि ये human या किसी और real world object को अगर आप as a data type declare करना चाहेंगे to capture the real world information, it's not one class, it's a class of classes of data type, a structure of structures data type. Let's carry on. ये देखें आपके DNA है, different forms of DNA. So again you can have a class for DNA or structure of DNAs. Why is DNA unique to each person? Every DNA is, even though it's not relating to programming, but it's a good information for everyone to know. Every DNA is unique to each person, although the DNA is composed of the same nitrogen-based molecules. Why then it's different for each person? I myself was very much interested in knowing this, so that's why I put this information here. This is because the sequence of nitrogen bases, again the keyword is the sequence of nitrogen bases is different in every person. So that is what makes a DNA unique to every individual, and that's very good. And I think it's a good information for all the students. That's what makes a DNA unique for every person. The sequence of nitrogen bases is different in every person. More than 99% of the DNA is the same for whatever biological species we talk about. And it is less than 1% DNA, so less than 1% DNA which differs among individuals, and that which basically captures uniqueness, sequence of nitrogen bases. ठीक है, तो यहाँ पे basically ये information बताने की reason ये है कि देखें DNA has its own class, and it's not one type of DNA. You can have class of classes for the DNA in order to capture the real world reality of information in the programming world. Yeah, structure of structures. Let's carry on. तो ये example है. तो again, before going to the programming side, I think you should be very clear why we use structures or classes and how it relates to the real world data information. So anyone asking you relating to questions like what is a class, what is a structure, so the simple answer would be it's a type of it's a data type to capture a real world information of objects. ठीक है ना, that's very simple answer, but you can have more programming style answers like it's a type of data which has different data types within it. ठीक है, or it can contain functions as part in a structure or class, are also called methods. ठीक है,
So again, that's another answer to the question relating to what is the structure or what is the class. ठीक है. So this is a simple example जो कि C के अंदर हम कर रहे हैं, updating the time by 1 second. Nothing. टाइम का स्ट्रक्चर हमने डिक्लेयर किया है जिसके मेंबर वेरिएबल्स आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स हैं, उसको हम अपडेट कर रहे हैं. और ये टाइम को अपडेट करने के लिए स्ट्रक्चर है. ठीक है. और यहाँ पे हम मेन के अंदर वो देखें, हम यहाँ पे टाइम ले रहे हैं और इसको हम बेसिकली अपडेट करके प्रिंट करें. तो लेट्स सी run this example. Let's मेरे ख्याल में ये भी एग्जाम्पल में मैंने नहीं की हुई है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नहीं की हुई है, लेकिन आपको इनकरेज किया जाता है कि आप ये एग्जाम्पल जो है वो खुद अपने टाइम पे करें. स्ट्रेट फॉरवर्ड, नथिंग, नो मैजिक अबाउट इट. जस्ट डू इट, कंपाइल एंड रन इट. यहाँ पे ये इन लाइन्स की ज़रूरत नहीं है, जैसे पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको. जस्ट हैव टू you get hours, minutes and seconds from the user as input, then you update it and then you just simply print it. So it's pretty straightforward. Lekin this thing which is surprising me, most of the जो programs यहाँ पे मैंने लिखे हैं वो after making sure that they run. So let me just give it another look. How can we that I don't have this program in my most of the programs मैंने successfully run करके make sure कि maybe it's in a different directory, but anyhow I think it's not a should not be a concern to students because we have done similar examples, so you should be okay. Chale, again, and once you do that, it's encouraging for you to do the same example in C++ and Python. Python, at the end of these slides, I will cover C++ and Python examples. Let's go through this examples of C. मैं बताऊंगा कि आपको C++ में क्लास को टाइप को कैसे डिक्लेयर करते हैं और पाइथन में कैसे करते हैं, so on and so forth. What is expected from all the students to do all these examples in C++ and Python as well. ठीक है जी. ये array of structures है and so basically तो यहाँ पे ये array का देखें, array of counters, array structures. हाँ ये है मेरे पास. तो let's go to C और यहाँ पे ये है हमारे पास. और that is an example of structure array. तो यहाँ पे हम देखें टाइम का स्ट्रक्चर है और वही basically using structure of arrays and we are just updating it and printing it. So let's go to the Linux terminal. As you can see here, ये देखें मेरा ख्याल में इसे मैंने ऑलरेडी कंपाइल किया होगा. तो लेट्स रन दिस एग्जांपल. लेट मी क्लियर इट और इसको मैं रन करता हूँ.
undefined reference to time update. So let me fix this problem.